कक्षा 10 साइंस। आई एम आर एस प्रसाद सर। Expected questions part 4. So let us start. And that question is first, and that is the choose the correct answer. It is choose the correct answer. So first one is the elements placed in zero group are called. इनको क्या बोलते हैं? They are called as noble gas. So first one is correct. Second है in the following मेटेलॉइड्स इज, बताना है इसमें कौन सा मेटेलॉइड है, तो बी इज आर्सेनिक इज द मेटेलॉइड. सो थर्ड वन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कोहल सीरीज, दैट इज द मेथेनॉल. ये होता है मेथेनॉल, ये है आपका सी पार्ट. नाउ फोर्थ वन इज द कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट से इलेक्ट्रिकल बनती है, दैट इज द सोलर सेल, ये है आपका डी ऑप्शन. Now fifth one is the main source of energy in an ecosystem is, कौन है इकोसिस्टम में, तो वो है सोलर एनर्जी. तो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं इसमें. नाउ कम टू द फिल इन द ब्लैंक्स. ये फिल इन द ब्लैंक्स है आपका. फिल इन द ब्लैंक्स. सो फर्स्ट वन इज द मेटल्स जनरली रिएक्ट विद एसिड एंड लिबरेट गैस. तो कौन सी गैस है बच्चों? ये है हाइड्रोजन गैस. सो यू कैन राइट हियर हाइड्रोजन गैस. नाउ सेकंड इज इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज, दैट इज द वर्चुअल. यू कैन राइट हियर वर्चुअल. नाउ थर्ड वन, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज, इट इज -273 डिग्री सी. Now fourth formula of baking soda is, baking soda बताना है, सोडियम बाइकार्बोनेट, it is NaHCO3. Author of animal ecology is, कौन है author? That is the Charles Eldon. Charles Eldon. यस, ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया. नाउ मैचिंग. मैचिंग पे आते हैं जरा. मैचिंग द फॉलोइंग. सो ए है ये और ये आपका बी है. तो चलते हैं पहले फर्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बी में कौन सा ऑप्शन होगा? दैट इज द डी. किससे होता है? प्लेन मिरर से होता है. सो यू हैव टू राइट हियर फर्स्ट नंबर. सो सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड. सोलेनॉइड के अंदर क्या होती है? तो ये होती है यूनिफॉर्म. सो यू कैन राइट हियर ट्रू. नाउ थर्ड वन इज द ओल्फैक्टरी इंडिकेटर. कौन सा होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर? दैट इज द क्लोव ऑयल, क्लोव का तेल होता है. सो यू कैन राइट हियर थर्ड नंबर. नाउ फोर्थ इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है. That is the B and you can write here 4. Now fifth है plant selected for Mendel's experiment. तो Mendel's experiment ने किसने किया था? पी पे, यानी कि मटर के दानों पे किया था. तो ये फिफ्थ नंबर आपका आ गया. Now come to the how can you calculate the valency of an element by its electronic configuration? So answer is the number of electrons present in the last cell of an element is its valency. Last cell में जो होते हैं वो valency होती है. तो कार्बन 6 लिया हुआ है. It is 1s2, 2s2, 2p2 और 2,4 you can say. So 4 is the valency. So therefore there are 4 electrons in the last cell of carbon, thus its valency will be 4. Now third question, write name and formula of the first 2 member of alcohol series. तो पहला मेंबर अल्कोहल का होता है मिथाइल अल्कोहल और इसका नाम है मेथेनॉल और फॉर्मूला है CH3OH. दूसरा है इसका इथाइल अल्कोहल एंड द आईपीसी नेम इज एथेनॉल एंड द फॉर्मूला इज C2H5OH. Fourth question, why does a balloon filled with gas burst when brought near fire? आग के पास लगते ही ये फट क्यों जाता है? तो आंसर है इसका when balloon filled with gas is brought near fire, burst
near fire, then it becomes hot and the air inside spreads यानी expand हो जाती है due to which it bursts. Now what is biomass? क्या है biomass? तो all plants of per unit area of land expresses total primary production at a particular time, and this is known as complete biomass of producer of an ecosystem. Ecosystem में जो उत्पादक होते हैं उनके लिए है ये. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Is placenta necessary for the developing fetus? Why? क्यों है जरूरी placenta? Yes, placenta is necessary for the developing fetus because in the uterus on the formation of 32 cells for the development of the body of the fetus. The pars placenta formed by the outer layer of the cell of this group is related to the mother's baby, and by the inner cells the entire body of the fetus is developed by the placenta. Food, water, gas, etc. are transferred to the fetus. Now convert 98.6 degree F to Celsius. तो फॉर्मूला हमारे पास है F minus 32 upon 212 minus 32 मतलब 180 होता है. इसके नीचे C minus 0 upon 100 minus 0 मतलब 100 होता है यहाँ पे. तो ये रियल में फॉर्मूला इसका ये आप लिख सकते हो F minus 32 upon 9 are equal to C upon 5. Now put the value of C. C नहीं F रखना है. F कितना रखना है इसमें? F is equal to 98.6 रखना है. यहाँ पे हमें पुट करना है. तो पुट करते ही क्या होगा? ये 98.6 हो जाएगा. 32 माइनस करेंगे तो 66.6 आ जाएगा. और ये 5/9 है ये. जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 37 डिग्री आ जाएगा. दैट मीन्स 98.6 डिग्री F इज इक्वल टू 37 डिग्री C. और यही आपका आंसर है. चलिए नेक्स्ट है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज 3/2 और यू कैन से 1.5. फाइंड आउट द speed of light in glass if speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second. फॉर्मूला है हमारे पास किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर. AMUG इक्वल टू कितना होता है? 3/2 एंड दैट इज 1.5. C इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 meter per second. सो AMUG का फॉर्मूला हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. ये 1.5 है, ये 3 into 10 to the power 8 है. तो हमें स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालनी है. सो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या हो जाएगा? 3 into 10 to the power 8 अपॉन 1.5. ये आ जाएगा 2 into 10 to the power 8 क्योंकि इससे जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा. Therefore speed of light in glass will be 2 into 10 to the power 8 meter per second, and that is your answer. Write mathematical form of Ohm's law, define conductance and write its SI units. So mathematical form of Ohm's law is equal to V is equal to V, R is equal to V upon I, where V क्या है? Potential difference across the end of the conductor, और I क्या है? Current flowing through the conductor. R क्या है इसमें? Resistance of the conductor. Conductance, it is reciprocal of resistance and its SI unit is ohm inverse, or you can say it is mho, MHO. Characters of all the organisms present in a class group are similar. Write any 3 reasons of this similarity. So answer is here. Characters of all organisms present in a class group are similar. The 3 regions of this similarity are as follows. So first क्या है? Various organisms have originated from the same ancestor. Second है they possess similar structure, and third है they possess similar functions. What is acid rain? Write its 2 harmful effects. So which is your answer? Carbon dioxide, sulfur dioxide, and oxide of nitrogen, or you can say nitrogen oxide, and produces as a result of
combustion of a substance react with water and form various acids. Rains produced by mixing of these in rainwater is called acid rain. एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 दैट इज द कार्बोनिक एसिड. यू कैन राइट हियर कार्बोनिक एसिड. सेकंड है SO2 O2 के साथ कंबाइन करके SO3 फॉर्म करती है और ये SO3 वाटर के साथ फॉर्म करके H2SO4 दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड. And NO2 react with water, it forms HNO3 and that is the nitric acid. So harmful effect इतने सारे एसिड बन गया. They are also powerful. So first है causing harm to vegetable monomer और second है decreases in rate of photosynthesis in plant. Third है increasing the amount of acidity and basicity of the soil. Atomic number of an element is 12. First है identify the element and the name it. Write the group number of this element in modern periodic table. Write the periodic of this element in modern periodic table and write the electronic configuration of this element. ये कई सारे क्वेश्चन केवल इस पे पूछा गया है. ये 12 नंबर पे है. इसका मतलब इस 12 नंबर की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. फर्स्ट आंसर है दिस एलिमेंट इज मैग्नीशियम. ध्यान रखना बच्चों ये मैग्नीशियम है दैट मीन्स Mg. बी है ग्रुप नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज मॉडर्न पीरियडिक टेबल इज सेकंड. ये सेकंड में है. क्यों है सेकंड में देख लो. 12 का मतलब होता है 2, 8 एंड 2. ये इसके कारण से सेकंड में है. सी है द एलिमेंट बिलोंगिंग टू थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल. क्यों है थर्ड पीरियड. ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड है इसलिए. ये डी देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट इज 282. ये हमने आंसर बता दिया है आपको. यू कैन राइट दिस वन. राइट द कॉमन नेम IUPAC नेम एंड फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ एल्डिहाइड सीरीज. चलिए एल्डिहाइड तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड सीरीज इज CnH2nO. सो पहला नंबर आता है फॉर्मेल्डिहाइड. इसको हम मेथेनॉल बोलते हैं IUPAC नेम. फॉर्मूला क्या है HC+O और ये H. दूसरा नंबर है एस्टेल्डिहाइड एंड इट्स IUPAC नेम इज एथेनॉल. ये है CH3C+O और OH. राइट कॉमन नेम IUPAC नेम एंड फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ एसिड सीरीज. तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एसिड सीरीज CnH2n और O2 होता है. ध्यान रखना बच्चों इसमें ऊपर वाले में O है अकेला, इसमें O2 है, बस इतना ही अंतर है. सो फर्स्ट है फॉर्मिक एसिड. मेथेनोइक एसिड IUPAC नेम है इसका HCOOH हो जाएगा इसका. और एस्टिक एसिड है सो नेम इज IUPAC एथेनोइक एसिड. सो CH3COO और H हो जाएगा ये. Nowadays, it is possible to obtain plants in pink color flower from plant of white and red flower. Do some characters intermix give some more such example related to the agriculture. तो ये आंसर है आपका. In the properties of the opposite pairs, one character is not completely effective over the other plants of red flower. Marpil's jalapa is crossed with plant of white flower. Then in the first generation, pink color flower are obtained in the second generation. F2 phenotype ratio that is the 1:2:1. यहाँ पे दिखा रखा है प्लांट जो है रेड कलर का कैपिटल R और ये व्हाइट कलर की स्मॉल r है. तो ये गामेट है इसका कैपिटल R और ये गामेट क्या है स्मॉल r. ये दोनों कंबाइन होते हैं तो फर्स्ट जनरेशन है ये. फर्स्ट जनरेशन में पिंक फ्लावर ज्यादा होंगे इसलिए कैपिटल R स्मॉल r है और इनटू ये क्या है कैपिटल R स्मॉल r है. ये फिर से सेकंड जनरेशन में ये इफेक्टिव हो जाएगा. पहली जनरेशन में तो ये इफेक्टिव होता है, दूसरी जनरेशन में ये इफेक्टिव होता है. तो इसमें क्या होगा रेड हो गए हैं तो रेड का 25%, रेड और ये पिंक है तो पिंक फ्लावर होगा 50% और व्हाइट कलर का जो फ्लावर होगा वो 25% होगा.
In the above experiment, all are factor intermixed. Other such example related to the agriculture by crossbreeding, hybridization, paddy and wheat plants or different characters of the some species seeds of desired characters can be obtained. Write the main points of the theory of evolution of organisms proposed by the Darwin and Wellek. तो आंसर है यहाँ द मेन पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एज फॉलोज. फर्स्ट क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स. सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज बाय द स्पीसीज ऑलरेडी प्रेजेंट. थर्ड है वेरियस ऑर्गेनिज्म हैव ओरिजिनेटेड बाय द सेम एंसेस्टर. फोर्थ है डाइवर्सिटीज फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स प्रोसीड थ्रू जनरेशन टू जनरेशन. फिफ्थ है एवरी ऑर्गेनिजम्स पोजेस सम स्पेसिफिक डिफरेंसेस टू मेंटेन हिज एग्जिस्टेंस. सिक्स है इन वेरियस ऑर्गेनिज्म एडवांटेजेस differences process specific place. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो आंसर है ये लेवल डायग्राम आपको दिखाया हुआ है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का. ये यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें दी हुई है. तो फर्स्ट में ये जो दिखाई दे रहा है ये आपको क्या है? नसल कैविटी है. और दूसरा ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको फायरेनेक्स बोलते हैं इसको. इसके बाद यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या है? लेरेनेक्स बोलते हैं. इसके बाद ये और नीचे जाइए तो ट्रेचिया बोलते हैं. और इसके बाद यहाँ और नीचे की साइड आते हैं ये है हिलोस. लास्ट में ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये मेडिस्टिनियल सरफेस है. और इसके बाद ये जो दिखाई दे रहा और यहाँ पर जाकर के ये पल्मोनरी आर्टरी एल्वेलर है और डक्ट है. ये यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये कैपिलरी है किसके लिए? रेड ब्लड सेल के. इधर आ जाइए ये है पेरिटल प्लूरा. ये वाला आपको जो दिखाई दे रहा है. इसके बाद जो है वेसल प्लूरला है. ये यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको प्राइमरी ब्रांचोइज है. ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको. इसके बाद जो है सेकेंडरी ब्रांचोइज है ये यहाँ पे जो शो हो रहा है. और ये टर्सरी ब्रांचोइज है जो यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको. ये ब्रोंचोइज है, प्लूरल स्पेस है यहाँ पे. और ये टर्मिनल है और ब्रोंचोइज है. ये सारे आपके यहाँ पे शो करके दिखाए गए हैं. ये क्या है? नेट ऑफ सेल है ऑन एलुवेली है. यहाँ पे जो दिखाया गया है नेट ऑफ सेल है पूरा नेटवर्क है इसका. ये वीन है आपको ट्यूब जो दिखाई दे रही है ये वाली. और एक कैनाल रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी है. ये जो कैनाल है ये पूरी रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी है. ये एलुवेली है और कैनाल रिलेटेड टू द रेस्पिरेशन. ये क्या चीज है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है. तो ये पूरा का पूरा आपको बनाना पड़ेगा. इसमें बिना इसके काम नहीं चलेगा. तो मेरे ख्याल से ये सारा समझ में आ गया होगा. आपको चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ फ्लावर एंड द रिप्रेजेंट द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. आंसर है फिगर रिप्रेजेंटिंग मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. तो पहले ये देख लेते हैं. ये है आपका स्टिग्मा, ये स्टाइल है और ये जाइनोसियम है. ये ओवरी है और ये स्पील है, पीटल है और ये एंथर है, फिलामेंट है और ये एंडोक्रीम है. यहाँ पर पोलन ग्रेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है. यहाँ स्टिग्मा है, ये मेल गामेट्स है और पोलन ट्यूब है. ये ओवरी है और ये फीमेल गामेट्स है. तो ये ध्यान रखना है आपको कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है. तो मेल एंड फीमेल गामेट्स इन फ्लावर ये आपको दिखा रखे हैं. तो आप लोग भी ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे डायग्राम को. What is meant by reflection of light? Write the type of mirror and write these uses of plane mirror. So answer: when light from homogeneous medium strikes the polished surface to another homogeneous medium, then its major part bounce back into the first medium. So mirror are mainly two types. First is plane mirror, second is spherical mirror. Spherical mirror further divided into two parts. First one is concave mirror and second one is the plane of mirror. Not plane mirror, it is the convex है. ये ध्यान रखना बच्चों, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे convex है. और ये कॉनकेव है, ये भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे. कॉनकेव कर लेंगे आप लोग, कॉनकेव मिरर है.
So three uses plane mirror are as follows. First है as a mirror of saving, and second in obtaining complete image of an object. Third है in obtaining reflected rays for an incident ray on a mirror. Now, what is the principle of reversibility of light? Write the difference between the absolute reflective index and the relative reflective index. The path along which a ray of light travels, on reversing the condition, it returns back along the same path. This is called principle of reversibility of the light. As shown in figure, on refracting from air to water, rarer to denser medium, ray AB bends towards the normal MN and follows path BC. At the point C, when ray BC enters from water to glass, then it follows path CD and bends towards normal PQ. When the incident ray CD moves away from the normal RS at the point of incidence D. पहले यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये एयर दिया हुआ है, फिर आपको ये वाटर दिया हुआ है, फिर ग्लास है और फिर से ये एयर हो गया। एक रेज आ रही है ए से बी की तरफ, ये दिखाई दे रहा है आपको, फिर बी से सी की तरफ जा रही है, फिर सी से डी की तरफ आ रही है और फिर डी से जो है ये ई की तरफ आ गया। यदि इसकी रेस हम पलट दें, यानी कि ई से डी की तरफ, तो ये डी से सी की तरफ आ जाएगी, फिर सी से बी की तरफ और बी से फिर ए की तरफ हो जाएगी, यानी कि इसके पाथ में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसी को हम रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहते हैं। चलिए, थर्ड द सिस्टम ऑफ एयर वाटर ग्लास एयर द पाथ of ray A, B, C, D, E. On reversing this system, the order will be air, glass, water, air. In this situation, according to law of reflection path forward by rays, light will be E, D, C, B, A. Thus, we can conclude that during the traveling of light through different medium, if at any point of the path its direction will reversed, then its path shows reverse behavior. This is called principle of reversibility of light. Now, difference between absolute reflective index and the relative reflective index. So, it is the absolute reflective index or it is your relative reflective index. When ray of light enter from air to vacuum to medium, then refractive index of medium with respect to the vacuum is called absolute refractive index. It is denoted by mu. When rays of light enter from one medium to other refractive index of the second medium with respect to the first medium is called relative index. It is denoted by 1 mu 2. Relation between the absolute refractive index and the relative refractive index. So, absolute refractive index of a medium is equal to refractive index of the second medium with respect to the first medium. It is the mu is equal to 1 mu 2. Draw the symbol of the following electrical component. First है एमीटर। तो एमीटर आपको ये शो करके दिखाया गया है, ये आपको ऐसे शो करके दिखाते हैं, ये आपको दिया गया है ए लिख करके गोल करके यानी कि राउंड लेकर के उसके अंदर ए लिख देते हैं, तो एमीटर को शो करता है ये। सेकंड नंबर आता है वोल्ट मीटर। ये रहा सेकंड नंबर वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर ये आपको शो करके दिखाया गया, ये रहा वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर को वी लिख करके शो करते हैं, ये आपको दिखा रखा है। इसके बाद आते हैं स्विच ऑफ है, जो ऑफ स्विच होता है वो ऐसे करके इसमें बिंदी हटा देते हैं, यहाँ बिंदी नहीं लगाएंगे बीच में, देखो, या फिर ऐसा लगाएंगे, इसको टच नहीं करेंगे, तो ये ऑफ स्विच है। इसके बाद आता है स्विच ऑन। ऑफ के बाद स्विच ऑन दिखाया गया, तो ये स्विच ऑन है बच्चों, तो ये देखना बीच में बिंदी लगा दी जाती है, तो बिंदी लगी हुई है इसके अंदर, या इन दोनों को टच कर दिया जाता है, ये आपको यहाँ शो करके दिखाया गया है। इसके बाद आता है सेल। सेल के लिए देखिए क्या है, ये सेल को आपको एक बड़ा बना देते हैं और एक को छोटा बनाते हैं बच्चों, ध्यान रखना ये, और ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, इसको सेल बोलते हैं। फ्यूज है, फ्यूज के लिए ये शो करके दिखाया गया आपको, और फ्यूज को हम और भी तरीके से शो कर सकते हैं, ये ऐसे करके बना देते हैं, देखो बच्चों, ये ऐसे करके फ्यूज बना देते हैं, तो ये फ्यूज होता है, ये भी फ्यूज ऐसे शो करके दिखाते हैं। चलिए, इस तरीके से भी फ्यूज करके शो दिखाते हैं, तो ये भी आपको दिखाई देना है, चलो ठीक है।
Now B है the rate of flow of electric current through a conductor is called electric current. It is denoted by I and its SI unit is ampere. ये आपको बी का क्वेश्चन था. राइट द डिफरेंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड राइट इट्स एसआई यूनिट. एसआई यूनिट एम्पियर होती है और ये डेफिनेशन है इसका. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. राइट थ्री डिफरेंस बिटवीन द अमीटर एंड द वोल्टमीटर. तीन डिफरेंस बताने हैं इसमें. देखते हैं आंसर. ये डिफरेंसेस बिटवीन द अमीटर एंड वोल्टमीटर. सो यू हैव टू राइट हियर अमीटर एंड हियर इज द वोल्टमीटर. सो फर्स्ट वन, स्ट्रेंथ ऑफ करंट इज डिटरमाइंड बाय इट. और यहाँ क्या है? नंबर वन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट इज डिटरमाइंड बाय इट. सेकंड है, इट इज जॉइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन सर्किट. सेकंड इसमें क्या होगा? इट इज जॉइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन द सर्किट. तो यहाँ पे थर्ड क्या? इट्स सिंबल इज डिनोटेड बाय ए और इट्स सिंबल इज डिनोटेड बाय बी. State the law which determines the direction of magnetic field developed around a state conductor carrying current. तो ये आंसर है आपका. Direction of magnetic field developed around a state conductor carrying current is determined by the Fleming right hand rule. तो Fleming right hand rule बच्चों आपको याद होना चाहिए. ये नीचे लिखा हुआ है. So according to this rule, if the four fingers, central finger and thumb of the left hand be stretched in mutually perpendicular direction, then the thumb shows the direction of motion of the conductor, forefinger shows the direction of magnetic field, and the central finger points in the direction of induced current. Give Valency equation for the following reaction. फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल विद वाटर वेपर. तो इसका आंसर ये है आपका. एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट विद वाटर वेपर टू फॉर्म मेटल यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड. सो 2Al2 2Al and 3H2O gas, Al2O3 that is the solid and plus 3H2. सेकेंड है आपका रिएक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो ये जिंक ऑक्साइड है यहाँ पे. तो जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम जिंकेट. तो ये NaOH से रिएक्ट करके क्या बनाता है? ये सोडियम जिंकेट बना देता है, Na2ZnO2. द नेम ऑफ दिस वन सोडियम जिंकेट एंड वाटर. नाउ थर्ड वन, रिएक्शन विद हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है. ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट it gets converted to quicklime. So calcium oxide and the carbon dioxide. तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है. हीटिंग है यहाँ पे. कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही. ये इसकी रिएक्शन है. तो रिएक्शन भी आपको कंप्लीट लिखनी पड़ती है. तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग. Explain slag and flux with example. So first one is the slag. In the process of smelting, flux combines with the impurities to form low melting fusible substance is called slag. Example है, in the smelting of iron slag named calcium silicate is formed. The formula is CaSiO3. Flux क्या है? Substance which is react with the infusible impurities present in ore at high temperature to form fusible slag are known as flux. Flux are of two types. First है acidic flux यानी silica, SiO2 borax, Na2B4O7 10H2O etc. are acidic flux, and the basic flux CaO, MgO etc. are the basic flux. What is allotrope? Write name of any two elements which exhibits allotrope. So you can write the definition first. The existence of an element in two or more forms which shows similar chemical properties but differ in physical properties are called allotropes, and the phenomena is called as allotropy. Like allotropes of the carbon are diamond, graphite, and allotrope of phosphorus are white and red phosphorus.
So these are the example you can write. Write the balance equation for the following reaction. First one is the reaction of sulfur dioxide with water. तो ये रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ क्या बनाता है, ये H2SO3, दैट इज द सल्फ्यूरस एसिड. सल्फ्यूरस एसिड. चलिए सेकंड क्या है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद क्लोरीन. तो ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है. ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर दीजिए. नाउ थर्ड है रिएक्शन ऑफ फास्फोरस विद ऑक्सीजन. ये है फास्फोरस P4O2 के साथ रिएक्शन करके 5O2 है P4O10 बनाता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड. फास्फोरस पेंटाऑक्साइड. What are involuntary and reflex action? So involuntary action, various such activities goes on our body of which we are unaware, like digestion of food in stomach, exchange of various substances in blood vessels, secretion of digestive juice, removal of hand from a hot object. Such type of activity which are performed against our will are called involuntary action. So reflex action, some actions are immediate and occur without the order of the brain. This type of reactions are known as reflex action, which are performed by spinal cord, like blinking of eyes, sneezing and the coughing, etc. are reflex action. So reflex actions are not controlled by brain, whereas involuntary actions are controlled by the brain. This way reflex and involuntary actions differ from one another. Why is pituitary gland known as master gland? So you can write answer. So here pituitary gland is known as master gland because it induces the controls the hormone secretion of all other endocrine glands like TSH. Hormones secreted by pituitary glands induced through thyroid gland to secrete thyroxine. Similarly, ACTH hormones of pituitary glands induced adrenal glands to secrete corticosterone. How does blood flows take place simultaneously in two paths from heart? Explain. So ये आपको दिया हुआ आंसर. Blood flows passes through two paths simultaneously from the heart. The path shown in the figure. ये path आपको शो करके दिखाया गया है. इसमें ये इधर से चलना चालू होता है और ये इधर को चल रहा है. देखो ये जा रहा है, ये एंटायर बॉडी है. एंटायर बॉडी से होते हुए कहाँ जाता है, ये राइट ऑरिकल में जाता है. ये राइट ऑरिकल है, फिर से राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर यहाँ से होता हुआ ये इधर जाता है. और ये क्या चीज है, ये लंग्स है और लंग्स से ये होता हुआ इधर को चलता है. ये यहाँ जा रहा है, ये लेफ्ट ऑरिकल में जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और फिर वापस इसी में आ जाता है. और ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है. इसी को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं. सो डबल सर्कुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड. इस तरह से पूरा ब्लड हमारे बॉडी में चलता है. So in one path, blood flows from heart to all the body cells and from these back of the heart. In it, due to concentration of left ventricle, oxygenated blood flows from the main artery and reaches to all the body tissues by various other arteries. Further, by the medium of cells, blood reaches to all the cells of the body. Deoxygenated blood from the cells by the other cells and the vein flows up to the right ventricle of the heart. In other path, by the contraction of right ventricle of the heart by the pulmonary artery, blood flows up to the lungs. Blood flows in the blood vessels is oxygenized in the lungs. Oxygenized blood from the
pulmonary veins flows up to the left auricle. इस तरह से चलता रहता है हमारा काम. Now come to the next one. The mechanism of the reproduction from pollination to develop of embryo in the flower is as follows. So first है ये pollination, the process of transfer of pollen grain from anther to stigma is called pollination. Process pollination takes place by air, water and insects. Third है formation of seeds. After fertilization, petals, anther, style, stigma dry up and fall off. Out part dries and ovary is left behind. Ovary grows fast and cells situated in the divide the growth and the formation. Fertilization, fusion of the male and female gametes is called fertilization. After pollination, a pollen tube is formed from the pollen grain. Pollen tube contains two male gametes. One of the male gametes passing through the pollen tube reaches the ovary and fuse with egg and form a zygote. This fusion is called fertilization. Of the seed start, these seeds contains an embryo which contains a permeable radicle and the cytosol. Mature ovary is called fruit. ये आपको करना है इस तरीके से, तो कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी. और ये आपको फिगर शो करके दिखा रखा है. यहाँ पोलन ग्रेन है, यहाँ पे जो शो कर रखा है ये यहाँ पहुंच जाता है, ये इधर से जाता है, इधर कोई दिखाया हुआ शो करके. ये एंथर है आपका, और ये फिलामेंट है, ये स्टिग्मा है, ये पोलन ट्यूब है. यहां से होकर के कहां पहुंच जाता है, इस जगह पे पहुंचता है. यहाँ पे पहुंचते ये जायगोट बन जाता है. जायगोट से सीड बनना चालू होता है और ये स्प्राउट होता है. इसके बाद यहाँ स्पील है और ये पीटल है. और यहाँ पे क्या दिखा रखा है, ये है जाइनोसियम, ये एंड्रोसियम है, और यहाँ पे ओवरी है, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है. इस तरीके से सारी चीजें आपको शो करके दिखाई गई है. और स्टेज ऑफ द फर्टिलाइजेशन टू स्प्राउट इन फ्लावर, ये पूरा का पूरा इसमें शो करके दिखाया गया है. इतनी फिगर आपको बनानी पड़ेगी और बहुत जरूरी है बनाना अगर मार्क्स लेने हैं आपको. इसी के साथ ये समाप्त हो रहा है बच्चों. नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके. और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद.